Machephy Eduworld. तो अभी एक बहुत ही सिंपल सा सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ना हो या जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट है। And we call the circular motion as uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात ये होती है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा ही पॉसिबल है कि स्पीड वेरी कर सकती है। सपोज यू आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक और यू कैन वेरी योर स्पीड ऑफ कोर्स। तो स्पीड वेरी करने से योर एक्सेलरेशन दैट कैन वेरी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So v, that is linear speed, remains constant. Linear speed remains constant. और linear speed हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये सर्कुलर मोशन की खास बात होती है। अगर ऐसा ना हो तो मोशन फिर सर्कुलर नहीं होगा। सपोज यहाँ पे स्पीड रेडियस इस डायरेक्शन में हो जाए है तो हमारा सर्कल नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसा मोशन लगेगा। तो स्पीड हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट और मॉड ऑफ v हमेशा कांस्टेंट रहे अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। Let us say the radius is capital R and at this instant velocity is v vector along this. So इसके लिए we can write some relations. पहला is mod of v constant रहता है, so mod of v अगर constant है तो dv by dt rate of change of speed ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब tangential acceleration 0 होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो there is no tangential acceleration. टेंजेंशियल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड हमेशा टेंजेंट के अलोंग, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, बट वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन नहीं है बट फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस देयर इज अनदर एक्सेलरेशन हियर, देयर इज अनदर एक्सेलरेशन हियर एंड वी आर गोइंग टू लेट अस फर्स्ट विजुअलाइज इट, बाद में विल डिराइव। I'll tell you the formula and I'll let us see how to visualize that. तो let us अभी इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, स्पीड चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज हो रही है। थोड़े टाइम बाद जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, स्पीड में चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, अभी भी लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुआ। तो सी दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे रखें, इसको पैरेलली मूव करा देते हैं। तो मुझे चेंज इन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो इफ यू रिमेंबर आई कैन राइट एक्सेलरेशन will be equal to final acceleration minus initial acceleration upon t, delta t, delta v upon delta t, ये average acceleration. So see, v final minus v initial का डायरेक्शन चाहिए। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये v final है और माइनस v initial इसका ऑपोजिट हो जाएगा।
थोड़ा सा इधर देखे तो यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये v फाइनल है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे ला रहा हूँ और माइनस वी इनिशियल ऐसा हो जाए, दिस इज माइनस वी इनिशियल। तो इन दोनों को ऐड करें अगर, सो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, तो हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए, एंड दिस इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। सो मींस जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के लॉन्ग नहीं है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एंड इसकी वजह से हमारे स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो आई हैव एन अनदर एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी पहले इधर था, फिर उसका डायरेक्शन चेंज होके सेंटर की तरफ है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा अंदर की तरफ, फिर यहाँ आएगा, फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ऐसे हर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, एंड वी कॉल दैट रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग होता है, रेडियल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द रेडियस, एंड रेडियल एक्सेलरेशन को ही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंड इसकी वैल्यू होती है या रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिखते हैं v²/r, और v/r क्या होता है, हमने रिलेट किया था v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v को हम लिख सकते हैं r ओमेगा, सो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो ये दोनों एक्सेलरेशंस होते हैं, इसको यू कैन प्रेफर टू राइट इट AC एंड AT, दो एक्सेलरेशंस होते हैं। तो सी, AC का डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ और AT का डायरेक्शन होता है टेंजेंट की तरफ, तो दोनों एक्सेलरेशंस परपेंडिकुलर है, तो वी कैन राइट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज A, ये दोनों एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर है, तो AC² प्लस AT², इसकी वैल्यू उतनी रहेगी क्योंकि AT तो हमारा 0 है, so total acceleration is also omega² r. Note this down. तो रेडियल एक्सेलरेशन का जो रोल है दैट इज ओनली टू चेंज द डायरेक्शन, so AC changes the direction of the velocity and AT changes the magnitude of the velocity. So here alpha is 0, alpha 0 है तो हम सर्कुलर मोशन के लिए रिलेशंस लिख सकते हैं, your omega will always be constant and जो rotation है that can be written as omega times t, that remains constant. And there is a relation n, suppose n is speed in RPM, speed in rounds per minute, rounds per minute, that is called RPM, RPM. Suppose you have n RPM, means n rounds लग रहे हैं, rounds मतलब 2 pi radians, n rounds लग रहे हैं per minute, per 60 seconds. So you can write 2 pi n by 60 radians per second. तो एक यूनिट होती है जो कॉमनली यूज करते हैं हम in rotation of machines, and is speed in rounds per minute, RPM. So n RPM is 2 pi n by 60 radians per second. And there is another unit called RPS. RPS means rounds per second, 1 round per second. That is 2 pi, 1 round में 2 pi radian होता है, तो 2 pi radian per second. So rounds per minute RPM and rounds per second RPS. So 1 RPS is 2 pi radians per second, and RPM, that is 1 RPM, that is equal to
2 pi by 60 radians per second. So in a uniform circular motion, omega is given as 10 radian per second, radius is given as 10 centimeter. To find linear speed, tangential acceleration, radial acceleration, net acceleration, then angular speed, in RPS and RPM. To find out these things. Then one more thing, angle rotated in 1 hour. Angle that is rotated in 1 hour. Find out this variables. Sir, radius 10 meter है ना? 10 centimeter. Radius is 10 centimeter. Yeah, hello Vaishnavi, can you tell me the answer for linear speed? कितना आएगा? 1 meter per second. 1 radian per second. What about tangential acceleration? Uniform zero, yeah. Uniform circular acceleration के लिए tangent circular motion के लिए tangential acceleration is 0. What is radial acceleration? 10. 10. 10 what? Unit is? Radian per second square. Radian per second square. Is that the correct unit? Omega square r निकालेंगे तो radian per second square आएगा क्या? इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ना, so 10 into 10 into 10 divided by 100, so this will come out to be 10 meter per second square. Because you are finding omega square r. Okay, this is the radial acceleration. Then what is the net acceleration? 10 unit will be meter per second. meter per second square. This is root over at square plus ar square. अच्छा, radial acceleration को centripetal acceleration भी बोलते हैं. This is also 10 meter per second square. Then what is angular speed in RPS, rounds per second? 6.2. 1 radian. 2 pi radian is 1 revolution, 1 round. So कितना rounds हो जाएगा? That will be 10 by 2 pi. 10 by 2 pi RPS. तो एक रेडियन में 1 radian has 1 by 2 pi rounds. तो 10 radians में 10 by 2 pi rounds. Is this clear? Yes. Okay. तो ये rounds per second है. तो rounds per second को rounds per minute में convert करना बहुत easy है. We'll just multiply it by 60. RPS को RPM में convert करना. So per second है, per minute में convert करना. 1 second is multiplied by converting per second into per minute. That will be multiplying it by 60. तो ये हो जाएगा 10 by 2 pi into 60 RPM. है ना, मतलब 1 सेकंड में इतना राउंड लगेगा तो 60 सेकंड्स में उससे मल्टीप्लाइड बाय 60 राउंड्स हो जाएगा. Okay, what is the angle rotated in 1 hour? 15. How much? 15. 15. Yes.
10 रेडियंस पर सेकेंड है, तो एक आवर में कितना सेकेंड होता है? दैट इज 60 into 60. So this will be 36,000 radians. Is this clear? Omega Sir, is 10 radian per second. हाँ, आरपीएम में डाउट है। आरपीएम में डाउट है। ओके, क्या डाउट है? तो वो समझा नहीं एक्चुअली। आरपीएम मतलब कितना चक्कर लगा रहा है एक मिनट में, दैट इज आरपीएम, राउंड्स पर मिनट। तो एक राउंड होता है 2 पाई रेडियंस। हाँ, एक राउंड होता है 2 पाई रेडियंस। सो 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो मुझे गिवन है कि 10 रेडियन रोटेट करता है, तो 10 रेडियन, सॉरी 2 पाई रेडियन में एक राउंड होता है, तो एक रेडियन में कितना राउंड हो जाएगा? 1/2 पाई, राइट? हाँ सर। तो 10 रेडियन में हो जाएगा 10/2 पाई राउंड्स। तो इतना राउंड्स पर सेकंड लग रहा है, तो 10/2 पाई राउंड्स पर सेकंड, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, तो एक सेकंड में इतना राउंड लग रहा है, तो एक मिनट में मल्टीप्लाइड बाय 60। और यू कैन राइट टू इट लाइक दिस, राउंड्स पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है राउंड्स पर मिनट में। तो 1 सेकंड इज 1/60 minute. या So that will be 60 rounds per minute. So 1 RPS is 60 RPM. 1 rounds per second, that is 60 rounds per minute. ये clear है? हाँ सर, अब समझा। So this is the case of uniform circular motion. Okay. Okay, now we're going to talk about a very general circular motion. Means circular motion हो रहा है and all the accelerations are, let us say, there. So how do we analyze that? अभी सिर्फ काइनेटिक्स की बात करेंगे, we won't talk about forces. एक्सेलरेशन समझ लेंगे तो फोर्सेस भी समझ में आएंगे. So very general circular motion. So let us say at this instant the speed is v. At this instant the speed is v, and we can have two accelerations. One is your tangential acceleration, that is directed towards the center. First I'll draw the radius r. So velocity is perpendicular to radius always, and I can have two acceleration. First is the tangential acceleration, then the second one is radial acceleration. और of course radial acceleration radius की तरफ होता है, tangential acceleration tangent की तरफ होता है. So this is your radial acceleration, this is your tangential acceleration. So we write tangential acceleration is equal to dv by dt, mod of v by dt. स्पीड को चेंज करने के लिए tangential acceleration रिस्पॉन्सिबल है, और रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. So tangential acceleration changes speed, tangential acceleration changes speed or magnitude of velocity, changes speed in circular motion, and the radial acceleration changes the direction of speed, that is velocity, changes direction of speed, only changes direction of speed in circular motion.
v square by r या omega square r. That is what we can write. तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर, एक रेडियल है, एक टेंजेंशियल है. So we can write net acceleration is equal to root over AR square plus AT square. ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा और दोनों का वेक्टर सम है. सो दो वेक्टर्स का सम निकालना है तो एक के टेल को दूसरे के हेड पे रख देंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा. दिस इज योर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन. So net acceleration is vector sum of radial acceleration and tangential acceleration, and let us call this angle as theta. This angle between acceleration and velocity is theta. So theta is the angle between acceleration and velocity. So हम tan theta को लिख सकते हैं radial acceleration divided by tangential acceleration, and theta is angle between acceleration, net acceleration and velocity. Between net acceleration and velocity. Net acceleration and velocity. So finally, if you want to write total acceleration, you may also write it like this. Net acceleration is equal to radial acceleration होता है ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर इसका होल स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है d मॉड ऑफ v बाई dt इसका होल स्क्वायर. स्पीड का रेट ऑफ चेंज लेना है d मॉड ऑफ v बाई dt. अच्छा, नेट एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी. ये रिलेशन करेक्ट है, हमारा काइनेमेटिक्स वाला रिलेशन करेक्ट है, बट उतना यूजफुल नहीं है यहाँ पे. बट यहाँ पे डी मॉड वी एंड डायरेक्शन अलग से चेंज करना है, इसको डिराइव कर सकते हैं, बट दैट वुड बी जस्ट more work not required for your syllabus. But I can give you as a homework, you can use this relation to derive this relation. Simply net acceleration is dv by dt. So people who want to go and research, I'll suggest them that you do this derivation. That will give you a deeper understanding of the circular motion. Kinematics में तीन इक्वेशन ही थे जो इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद फिर पूरी एनालिसिस है मैथमेटिकल एनालिसिस. Okay, note this down and then we'll do some questions. Let us practice some questions based on this. So suppose take a circular motion and the radius of this is given as 10 centimeter. इस इंस्टेंट पे जो स्पीड है linear speed, and write that as 10 centimeter per second or 0.1 meter per second. Net acceleration, that is given as 1.5 meter per second square. Again, I'll first give an easy question. Net acceleration is 5 meter per second square. Then angle between velocity and acceleration, that is 37 degree. So first you have to find the tangential acceleration, then find centripetal acceleration or radial acceleration, then find the speed, and then find
Find out these four quantities. Also find the angular velocity. Naman, can you tell me tangential acceleration कितना आएगा? So in this case, velocity और जो radial acceleration है वो perpendicular होगा. So अगर ये net acceleration है तो tangential acceleration का direction ये हो जाएगा और इसके perpendicular होगा radial acceleration. So हम tangential acceleration को लिख सकते हैं net acceleration का cos component और radial acceleration को लिख सकते हैं net acceleration का sin component. नमन sin 37 कितना होगा? Sir, 3/4. 3/5. Sorry, sir, 3/5. 3/5. और cos 37 कितना होता है? So cos 37. हाँ, cos 37. Sir, it is 4/5. 4/5. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a net cos 37 कैसे लिखा वो समझ में आया? हाँ सर, कॉम्पोनेंट लेके कितना आ जाएगा नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? 4 मीटर पर सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड. और रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन 15/5. 15/3. ठीक है. लीनियर स्पीड निकाल सकते हैं. तो लीनियर स्पीड और इसमें रिलेशन है रेडियल एक्सेलरेशन में रिलेशन. तो रेडियल एक्सेलरेशन हम लिखते हैं v²/r, है ना? ω²r. हाँ, या v²/r. तो यहाँ से v आ जाएगा √ओवर रेडियल एक्सेलरेशन इनटू रेडियस. कितना आ जाएगा ये √ओवर? रेडियल एक्सेलरेशन तो 3 × 10 30. सेंटीमीटर. 30 नहीं है, 10 सेंटीमीटर है ये. तो 0.3 सेंटीमीटर per second. एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिलेट कर सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है. So tangential acceleration is equal to r alpha. ठीक है, हाँ सर. ये डिराइव किया था here, और यहाँ पे डिराइव किया था. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r alpha. यस सर. So that is यहाँ से अल्फा आ जाएगा. अल्फा कितना आएगा? 80/9. That will be 40. 4/10. Yeah, 4/0.1. सॉरी सर, 0.1 सेंटीमीटर में उसको मीटर में करना है. हाँ. 0.1. फिर एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड पता है तो एंगुलर स्पीड भी आ जाएगा. या तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ω² is ar. तो ओमेगा इज रूट रेडियल एक्सेलरेशन बाय r. और रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन वाज 3 3 by by 0.1. 0.1. that is √30. रेडियन पर सेकंड. ठीक है, तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. लेट अस डू वन मोर. सर वो 400 होगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा
Alpha is 80 by R. R is 0.1 and 80 is 4. 4 by 0.1, 40 हो जाएगा. Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay, let us say net acceleration is given as 10 meter per second square and alpha is given as 53 degree. And this is given as 20 centimeter. So find these quantities. Find these quantities. This is the direction of speed. Barbie, tell me the value of tangential acceleration. 6 meters. 6 meter per second square. Radial acceleration 8 meters per second square. and linear speed 4 root 0.1 meters per second. मतलब under root 1.6. root 1.6. This much? 30 radians per second square. 30 radians per second. And omega? Root 40 radians per second. Vaishnavi, are your answers matching with this? Yes, sir. All of them? Yes. Okay. Okay, let's do one more. So this time, radius is given as 10 centimeter and speed is given as a function of time. That is, let us say 2t. Speed is a function of time, t is in seconds, v is in meter per second. This comes in meter per second and time is in seconds. Let me give this as 2t square. So at t is equal to 1 second, you have to find tangential acceleration, radial acceleration, then net acceleration, then speed, then angular speed, and then angular acceleration at t is equal to 1 second. Tangential acceleration is d mod of v by dt. Already v there over. Radial acceleration is v square by r, but you find out here 1 second. Net acceleration will be root over at square plus ar square. V is equal to, that you can find, omega is v by r, alpha is ar at by r. Find out these quantities. Vaishnavi, tell me tangential acceleration. 4 meter per second. 4 meter per second. Radial acceleration 40. 40. Then this will be
Sir, I'm doing master. Okay. Now we can just take the square root, and this will be 4 root 101 meter per second square. Okay, do the rest of it. Tell me the value of speed. I need a per second. Sir. 2 meter per second, right? Yes. And omega, 20 radian per second. 20 radian per second. Alpha, 40 radian per second. Sir. 40 radian per second square. That is correct. So if the speed is given, we can speed as a function of time t is given. Then we can calculate all of the components of a circular motion, all of the variables in a circular motion. Suppose a particle is undergoing a circular motion given by, and the speed is given by 4t, v is equal to 4t, and the radius is 2 centimeter. Radius is 2 centimeter. First question is find tangential acceleration at t is equal to 1 second. And second question is find total acceleration at t is equal to 1 second. At t is equal to 1 second. So these type of circular motion are called non-uniform circular acceleration. So tangential acceleration 0 now, so those are called non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में acceleration tangential वाला 0 नहीं होगा. अर्जुन, tell me AT के लिए कैसे find out करेंगे tangential acceleration? Tell me the formula first. Tangential acceleration कैसे find out करेंगे? This is AT, that is tangential acceleration. Tell me the formula first. क्या लिखते हैं tangential acceleration को? दो फॉर्मूला से एक dv by dt है और एक v square by r है. तो इसमें से tangential acceleration वाला कौन सा है? dv by dt. dv by dt. So 4t को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? It will be t. t डिफरेंशिएट हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा. So it will be 4 meter per second square. अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है अर्जुन? क्या होता है फॉर्मूला? v squared by r. v square by r. तो 1 सेकंड पे स्पीड कितना हो जाएगा? 4 into 4 and radius is 2 centimeter. It's 2 centimeters. So that will be 800 meter per second square. And what is net acceleration? Tell me the formula first. Root over so let us take a radius to be 2 meter. That would simplify our things. The radius for 2 meter ले लेते हैं. Then this will come out to be 4 into 4 by 2. That is 8 meter per second square. So net acceleration is tangential acceleration per square plus radial acceleration per square. So 4 root 5 meter per second square. That is the net acceleration at t is equal to 1 second. So that's it. That's the kinetics of circular motion. I'll just go through all the formulas once again. So let us say the radius is given. Radius is capital R. This is the linear speed.
This is the angular speed, and this is the net acceleration. Then we have the radial acceleration, tangential acceleration, and relate all of this. So non-uniform circular motion के लिए we can write down the following relations. सबसे पहले अगर तीन relations लिखे, so अच्छा first relation is S is equal to R theta or ds is equal to R d theta. So from here we get omega is equal to d theta by dt, alpha equals to d omega by dt, and alpha equals to omega d omega by d theta. इसके बाद radial acceleration लिख सकते हैं, that is omega square r, that is equal to v square by r. This is responsible for changing the direction, changes direction. And then we have tangential acceleration, that is d mod of v by dt, a rate of change of speed that changes speed, Then net acceleration, that is root over ar square plus at square, and we relate v as v with linear velocity and omega with v is equal to r omega, and angular acceleration with tangential acceleration, alpha is equal to at is equal to r alpha. At is equal to r alpha. These are all the relations, they are compiled together. And इसके बाद अगर alpha constant हो तो फिर relations लिख सकते हैं. If alpha is constant तो तीन relation लिख सकते हैं. Omega equals to omega naught plus alpha t, theta equals to theta naught plus omega naught t plus half alpha t square, and omega square equals to omega naught square plus 2 alpha delta theta, theta minus theta. This is true when alpha is a constant. This is all we studied. In the next class, that will be on Wednesday, we'll be learning about dynamics of circular motion. Means different objects पे force लगा रहे और circular motion हो रहे, and how do we calculate the circular motion? How do we calculate the forces, the accelerations? We'll also see that how we can use friction in circular motion and various scenarios. So we'll bring in Newton's law to circular motion. That will be the topic of the next class. Okay, so DPT4 have been DPT4, I think it is offline. It is submitted by today, and upload this screenshot after you are done. That will wait for today. DPT4 अभी submit कर देना है. Okay, so everyone noted this? Yeah. Okay. Okay, then that would be all. You can try start doing questions from your SC Verma, and इसके circular motion के you can do the starting at least 5 Verma, 0, 6, 7, 8, 9. Okay, starting 5 questions. Let us try those. Starting 5 questions only from exercises. And remember, all students, you have to finish it. Just write down those SCRMA questions in your notebook and send it chapter wise. Okay, then that would be all for today. Thank you.